We'll wait for a minute and so, and then we'll resume our class. Good morning. Good morning. We'll wait for a minute. एक आध मिनट के लिए हम लोग रुकेंगे and then we'll resume our class. ताकि कुछ लोग ज्वाइन कर लें. Good morning, everyone. So in this session, we'll be discussing about constitution, polity, and governance. Okay, so here we'll be discussing only about constitution, polity, and governance. Okay. So as I stopped yesterday only about, we have discussed only and only ideals. And in that on that ideals, we discuss only one component, that is sovereignty. And so today we'll continue with sovereignty. After sovereignty, we'll continue further. Okay. Now let us begin our topic. Let us start our topic. So crack all UPSC civil service optional subject with us, that is top educator, quality content, and learning experience. So you see, it's India's largest learning platform. It's India's largest learning platform, so get the subscription of it. So once you'll get the subscription of it, you see what benefit you will get. You will get daily live classes, and in that daily live classes, you will be chatting with the educators, you will be engaged with the discussion, you'll be asking doubt classes, and many more things. Again, you see there are more than 15,000 plus structural courses, and in that structural course, all the structural courses are well arranged. Live test and quiz are there only and only to evaluate the performance of the learner. Okay. Unlimited accessibility. Unlimited accessibility literally means that if you fail to get daily live classes, if you fail to get, then you see recorded class is available for you. This class is available for you, and you can really get the recorded class and listen it anytime, anywhere. You see, have completed graduations. About me, I have completed graduation from Calcutta University in science subject and has done MA in public administration from IGNOU University. I am acting as a mentor for last 11 years and so in UPSC civil service exams in public administrations, polity, and governance, and have appeared for UPSC civil service interview twice. Have served in many reputed IAS coaching institutions in Delhi and many more states. Under my guidance, many aspirants have cracked UPSC civil service as well as many state level exams too. Okay, so along with me, top 100 educators will be nurturing you to make your dream fulfilled. And in this slide, you can see that there is an example, there is an slide, few educators will be really nurturing you. Then you see, we talk about UPSC civil service. We talk about UPSC civil service plus course. And when we talk about UPSC civil service plus course, you see for 1 month the fees is 9,000. But if you apply my promo code MDYT, you will get 10% discount. आप कभी भी एडमिशन किसी भी कोर्स में ले, आपको 10% अगर डिस्काउंट मिलता है,
मेरा प्रोमो कोड अगर लगाते हैं आप MDYT, you will get 10% discount and you see 81,100 you will be getting fees that you have to pay. Similarly, for 3 months, you see 22,500 is the fees. And for 3 months, you see 20,500. If you apply my promo code, you will be getting 10% discount and you have to pay this much amount. So is the case for 6 months, 40,000. If you apply my promo code, you will get 36,450. For 12 months, 24 months, and 36 months, you see it's 49,500, 72,000, and 9,000, 90,000. But again, if you apply my promo code, that is MDYT. If you apply my promo code MDYT, so you see you'll be getting discount of 10%, and with this base fare, the 10% will be reduced to this. Similarly, for iconic courses, if you see in this iconic courses, for 12 month fees is 69,500, for 24 month fees is 1,07,000, and for 36 month fees is 1,41,000. But if you apply my promo code, you will get 10% discount. In this base fare, you will be getting 10%. And my promo code, don't forget to mention my promo code MDYT. Please don't forget to mention my promo code MDYT. Okay. And once you apply my promo code, really you will be getting the benefits of much more things which you needed most. Okay. So that is why when I say, please don't forget to write. And now you see there is no use of saying this because now if you apply my promo code, you will getting discount here 10%, you'll be getting discount here 10%. Okay, you'll be getting discount here 10%. So now you have to pay separately fees for general studies and separately fees for optional also. Okay, separately fees for general studies and separately fees for optional also. Okay, handkerchief. Okay, so you see that is why when we say about now the optional course which are being provided, you can see here in this slide. जो ऑप्शनल कोर्स हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, आप देखिए वो ऑप्शनल कोर्स का चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग यू सी ओनली दिस 4 देयर आर you see these are all literature subjects. So Unacademy is also providing literature optional also. Unacademy is also providing literature optional also. Along with this optionals, these all are popular optionals which the students are preferring. Then you see this is the subscriptions plan, and you see once you get the subscription plans of duration of 1 month, 6 months, 12 months, 24 months, 36 months, you see this is the base fare of all GS and optional subject. So this is for optional and this is for GS. So you see, good morning Aziz. So if you apply this 5,000 for 1 month, 6 months, 12 months, you see in this phase fare you will get 10% discount if you apply my promo code MDYT. You'll get 10% discount, that is MDYT if you apply my promo code. Okay. So this is what, and in optional, in general studies also, if you want to apply for general studies, if you apply my promo code MDYT, you will get 10% discount. Anyway, now as we people were discussing preamble, and with this preamble we have started, as I said, that the philosophy of preamble has been divided into two phases. One is ideals and aspiration. You see, when we say about ideals and aspirations, these all ideals and aspirations are for we the people. And this is what we are going to discuss about it. As yesterday we have discussed about we the people, you see, we have also discussed about sovereignty.
because these all are preamble values like sovereignty, socialist, secular, democratic, republic. These are the pillar on which the constitution is being rested. कॉन्स्टिट्यूशंस के ये पिलर माने जाते हैं जिस पे कॉन्स्टिट्यूशंस को खड़ा किया गया है. Okay, so we have discussed about sovereignty yesterday. There is no doubt that if you have any question, you can ask with the sovereignty. I'll be answering you. Now we'll be discussing about socialism. Aziz, can you tell me, is India is a socialist country? Aziz, can you tell me, क्या भारत एक समाजवाद देश है? Yes, Aziz. And those who are listening, please tell me, is India is a socialist country? Please give me your reply. You see, we are not socialist country. As like that of USSR. Though we have adopted this socialistic pattern by 42nd Amendment Act 1976, और किसके कहने पर हमने ये ऐड किया था? On whose recommendations we have included this? That has been included on the recommendation of Swarn Singh Committee. स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंक्लूडेड सोशलिज्म्स, एंड सोशलिस्ट वर्ड वाज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर. दैट डजंट मीन्स इंडिया इज अ सोशलिस्ट नेशन. वी हैव अडॉप्टेड सोशलिस्टिक पैटर्न. याद रखें, हम लोग सोशलिस्टिक पैटर्न अडॉप्ट किए, हमारा कंट्री सोशलिस्ट नहीं है. नाउ सी, the word socialist were added to the preamble by 42nd Amendment Act 1976. Socialism means ownership of productive force by the government so that they benefit people equitably. Private ownership can deepen inequality. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करते हैं तो ये सरकार का जिम्मेदारी बनता है. It is the responsibility of the government to distribute goods and services democratically, to remove the disparity among the society. To remove the disparity among the society. अब आप हमें एक बात बताएं, why the private ownership never believes in socialistic pattern? Why? Because when we say about socialistic pattern says that since India is a democratic country, we very much favors welfare oriented. But this private ownership is always profit motive. This is profit motive. And since this is profit motive, there is high chance of exploitations of citizens in the country. And when it exploits the citizens in the country, you see obviously the distribution of goods and services will not be equally distributed. So equitable distribution of goods and service will not take place when private ownership will be there. You can take the example of East India Company. Today in India, you see rich and poor parity. This parity you can see it from that time onwards. उस दौर के टाइम से आप इसको देख सकते हैं. That the East India Company was a private player, and since they were the private player, they really exploited the country, and because of them, the inequality among the society increased. That is hell to heaven.
And you can see the best example that our raw material was being furnished, was being taken to their country, they furnished it, filtered it, and they again sell it to the Indian country with high rate, with high rate. So this is how they were exploiting. So why? Because this East India Company was a private player. They were given license only and only to do business in India. But ultimately, this businessman, looking at the heterogeneity in India and diversity in India among the rulers as well as among the people, they started ruling in India. They started ruling in India. And that is why when we say about socialism, so आप देखिए कि जब भारत आजाद हुई तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास प्राइवेट कंपनीज नहीं थे, बट गवर्नमेंट ने प्राइवेट्स को अलाउ भी नहीं किया और प्राइवेट आना भी नहीं चाहते, बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट देयर फेथ इन प्राइवेटाइजेशन. क्योंकि इनिशियली उनको ये बिलीव, ये मान के चलते थे पीपल कि अगर प्राइवेटाइजेशन आ गई तो अगेन द कंट्री विल बी सफरिंग एज लाइक दैट ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया. क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक प्राइवेट प्लेयर थी, ऑनरशिप थी. So that is why it says that ki by 42nd Amendment Act, this word socialistic was added in the preamble only and only related to governmental pattern, governmental affairs, and government will distribute the goods and services among the people democratically. Because you see, it is the role of the government to treat every people equal, and because of that the government keeps on making policy to make all vulnerable sections at par with the other section. This is very important. Okay, then you see, when we say about socialism, you see public ownership and control can reduce disparity. Exactly, very true it is कि पब्लिक की जो ऑनरशिप है, अगर सरकार उसको अपने हाथ में रखेगी, लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होगा. The faith will be developed in the people. That is why you see when we say about constitution, what is constitution? So constitution literally means it has faith and aspirations of the people. यानी लोगों का विश्वास संविधान में टिका हुआ है. संविधान क्या है? सरकार कैसे चलाई जाएगी, how the government will govern, it is a document. Okay, so you see when we say about this public ownership, when we say about this public ownership and control, which can reduce the disparity to ensure equitable enjoyment of resources and opportunity. यानी अगर ये सरकार के हाथ में रहेगी तो सभी वर्गों को, सभी लोगों को, कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, there will be no discrimination. There will be no discrimination. अगर ये रहती है. You see, that is, disparity in socialistic society are not as stiff as they are in market society. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, हमारे प्रियम्बल में देखिए एक वर्ड यूज किया गया है, जस्टिस. जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो देखिए ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए एंड इट्स अ पार्ट ऑफ सोशलिस्टिक सोसाइटी. यानी अगर गवर्नमेंट इस चीजों को, अगर गवर्नमेंट ऑनरशिप रखती है, गवर्नमेंट इज कीपिंग द ऑनरशिप, गवर्नमेंट इज कीपिंग
government is keeping the ownership अगर गवर्नमेंट ऑनरशिप रख ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये होता है कि द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इक्विटेबली बट ये चीज मार्केट के साथ नहीं है बट दिस इज नॉट देयर इन मार्केट क्यों क्योंकि आप खुद रियलाइज करें यू रियलाइज बाय योरसेल्फ yes honestly speaking you realized by yourself that आज आपके पास देयर आर वोडाफोन देयर आर मेनी टेलीकॉम कंपनीज वो सर्विस उसी को प्रोवाइड करेंगे जिनको वो दोज हु आर पेइंग फॉर इट तो आप कहेंगे सर गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है बीएसएनएल क्या कर रही है तो आप जरा बीएसएनएल के प्लान के और प्राइवेट वाले के प्लान में जरा देखिए क्या डिफरेंसेस है you just see the differences so you will come to notice that yes there is a difference so that is why India is not a socialistic country I am always saying this India is not a socialistic country but India has adopted socialistic pattern कम्युनिस्ट में और सोशलिस्ट में यही फर्क है कि यू सी इन कम्युनिस्ट all the ownerships are there in the hand of government and government will distribute according to its own plan and process but socialistic pattern में there is a mixed economy यानी वहां प्राइवेट भी काम करेगा और पब्लिक भी काम करेगी this is not there in communist we'll discuss later part of it so you see this is what it talks about the that is the disparity in society socialistic society now socialism however has many forms ये भी बात सही है this is also true that socialism has many forms each has its own emphasis on the extent of public ownership on the extent of its public ownership by means of products like land labor etc यानी ये अपने आप में दिस इज you if you will notice this is itself is a quality of the government this is one of the quality of the government which is having it which is having it okay that the ownership of labor अब लेबर का ऑनरशिप उनके पास कैसे रहेगा मेकिंग लॉज लेबर लॉज ट्रेड यूनियन लॉज ये प्राइवेट वाले को नहीं दिया जा सकता कि आप बनाए अगर उनको दिया जाएगा दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट इट they will try to exploit it now the crucial difference between socialism and communalism is that the latter has the entire economy under the state control later का मतलब ये हो गया communalism की बात करें यानी there is a crucial difference between socialisms and communalism is that the latter has the entire economic control that is under state control मतलब जितने भी स्टेट की रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के अधिपत्य में होंगी यानी गवर्नमेंट उसको देखेगी बट इट डज नॉट अलाउ प्राइवेट प्रॉपर्टीज वो प्राइवेट को अलाउ ही नहीं करते the best example you can see Chinese communist okay communist
तो इस बेसिस पे इट डज नॉट अलाउ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. सोशलिज्म अलाउज मिक्स्ड इकोनॉमी, that is both government and market coexist. Why the socialism allows mixed economy? बताएं, why does socialism allows mixed economy? Please tell me, those please tell me, why did socialism allows mixed economy, that is market will also coexist side by side with government? Why? ऐसा क्यों? Yes, Aziz, if you are listening you can answer it. थोड़ा इंटरेक्शन भी रखेंगे अजीज एंड दोज हु आर लिसनिंग. तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी, अर्लियर हमारे पास अगर आप नोटिस करेंगे तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया है 1990s के बाद, आफ्टर 1990s. ओके, आफ्टर 1990s. ओके, आफ्टर 1990s. इससे पहले इंडिया वाज फॉलोइंग अ सोशलिस्टिक पैटर्न, नॉट सोशलिस्ट स्टेट बट सोशलिस्टिक पैटर्न वाज इट्स फॉलोइंग. आप देखिए ना, हमारे जितने 5 इयर्स प्लान है कैसे कैसे मॉड्यूल किए गए. एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर, ये सब चलते आए. और 1990 में इट द गवर्नमेंट फील्स द कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी. आप देखिए ना, स्ट्रैटेजिकली आप 1991 से यू जस्ट पास ऑन विद दिस फेज. In 1962, India faced war with Indochina. In 1965, India faced war with Pakistan. तो हम लोगों ने जो 1950s में जो कर्जा लिया था कि हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट ली थी ना, वो सारा पैसा यहीं खर्चा कर दिया वॉर में. भाई, एक बार वॉर होने से ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है. और 1971 में अगेन वी फॉट अनदर वॉर. और उस दौर के टाइम में इफ यू सी देयर वाज अ क्राइसिस इन ऑयल आल्सो, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम हो गई थी इंडिया को. तो 1971 में वी फॉट अ वॉर दैट इज कॉल्ड ईस्ट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान वॉर. और 1991 में ही इंदिरा गांधी जब चुनाव में आई तो उन्होंने कहा गरीबी हटाओ देश बचाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. तो आप देखिए, जब ये रिमूवल ऑफ पॉवर्टी लाई गई तो इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया एक सोशलिस्टिक कंट्री है और इंडिया सोशलिस्टिक पैटर्न को सोशलिस्टिक पैटर्न को अडॉप्ट किया. और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के वजह से यूसी 19, और वो चुनाव में लड़ी तो वो इसी वजह से आई थी इंदिरा गांधी. और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के बाद आप देखिए कि व्हेन वी से अबाउट दिस रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, तो many social policy was made for the equal distribution of goods and services in the society. और जब इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि अब हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग इक्वली इन सोसाइटी, सो by 42nd Amendment Act she included socialist in the preamble.
सोशलिस्ट प्रियम्बल में डाल दिया गया। तो आप देखिए, अब आप एक्सेस ऑफ सोशलिस्टिक पॉलिसी लेकर आए, एंड द सेकेंड थिंग वाज व्हेन द मोनोपोली वाज देयर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। और जब मोनोपोली गवर्नमेंट के हाथ में थी ना, when there was monopoly in the hand of government, so you see government was not accountable. Transparency lack of transparency was seen in the government part, यानी ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में नहीं दिखी, और हैरेसमेंट बहुत ज्यादा हुआ करता था। अल्टीमेटली यू सी आवर इकोनॉमी क्वश्ड इन 1990। हमारी इकोनॉमी क्वेस्ट कर गई, तो हमने एक नया पैटर्न अडॉप्ट किया। हमने कहा कि सोशल ऑब्लिगेशन इज द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सोशल ऑब्लिगेशन will be there in the hand of government. जब सोशल ऑब्लिगेशंस गवर्नमेंट के हाथ में थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट डज नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज एज वेल एज मनी to invest in other sector. So we used liberalization, privatization and globalizations, and allowing market to take the activities of government in those areas where the government are not able to do properly. That is why we adopted mixed economy from 1990s. It doesn't mean that India is a socialistic nation. मैं बार बार कह रहा हूं कि by adopting mixed economy, India एक socialistic country है, ऐसा नहीं समझेंगे। India has adopted socialistic pattern. अब आप कहिएगा कि सर संविधान में the Constitution of India has been adopted from many sources, बहुत सारे कंट्री से अडॉप्ट किया गया, तो क्या हम उस टाइप में चले गए? नो, वी हैव अडॉप्टेड देयर आइडियाज एंड इंडियनाइज इट अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ। ठीक इसी तरह से हमने सोशलिस्टिक पैटर्न, यू सी वी हैव टेकन द सोशलिस्टिक पैटर्न फ्रॉम, you see, we have added it in 42nd Amendment Act, earlier USSR. हमने यूएसएसआर जो है, अर्लियर यूएसएसआर है, उससे हमने क्या किया, ये सोशलिस्टिक पैटर्न लिया, आइडिया लिया है कि हमें समाज में, और इस सोशलिस्टिक पैटर्न को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। Why administrative state? Because here the government will look after its citizens from, please wait a minute. You see, we have adopted socialistic pattern, और socialistic pattern का मतलब होता है the government will look after its citizens from birth to death. और womb to tomb. वोम का मतलब होता है दैट इज बर्थ, टॉम का मतलब होता है दैट इज डेथ। एक ही चीज को मैंने दो बार बोला है। सो यू सी वी
have adopted socialistic pattern because India is an administrative state, and the people, the faith of the people was towards the government, not towards the private player. That is why the government has adopted socialistic pattern only and only to distribute goods and service equally. That is why, and later part, we do have adopted mixed economy. मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे प्राइवेट भी काम करेंगे और पब्लिक भी काम करेंगे. सो हियर द पब्लिक इज रिलेटेड, द गवर्नमेंट इज रिलेटेड विद वेलफेयर एक्टिविटीज, and here market is related with infrastructure activities. इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज. तो आप देखिए आज के टाइम में रोडवेज जितने भी हैं ये सब कौन बना रहा है? प्राइवेट वाले. मिक्स्ड इकोनॉमी. तो वी आर पासिंग विथ मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, सो नाउ सिंस अगेन यू सी आई सेड ना, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हम लोग कब लेकर आए? सिंस 1990s, यानी 1991 में वी हैव पास थ्रू अ फेज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. देयर इज अ न्यू डायरेक्शंस टू इंडियन इकोनॉमी towards greater role for market in economic development and retreat of state. अगर हम retreat of state की बात करें तो this is in simple terms we could say rollback of the concept. रोलबैक का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट उन जगहों से हट रही है जहां प्राइवेट अच्छा कर सकते हैं. Government is getting out from those areas where the privates are really doing better. That is called rollback concept. But the core of the government is none other than welfare. यानी welfare को government छोड़ेगी नहीं. So it has triggered a debate as to whether the constitutional goals of socialism is being implemented or not. क्योंकि अगर मार्केट आ जाती है इकोनॉमिक ड्रिवन को करने के लिए, तो यू सी कॉन्स्टिट्यूशंस में जो गोल हमारे लिखे गए हैं, लाइक जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड social, political, and economic justice. You see, then we have equality. Equality means equal of opportunity, status. ये सब फिर तो इनका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि market is there for exploitation. Isn't? When market is there for exploitation, तो there is no use of getting all this economic activities. तो इसलिए इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल फिर करेगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन में जो गोल्स लिखे गए हैं, जो प्रियम्बल्स में गोल लिखे गए हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अचीव करेगी? तो देन इट वाज सेज दैट दिस सोशलिस्टिक, यानी गवर्नमेंट जो वेलफेयर पॉलिसी बनाएगी, तो वेलफेयर पॉलिसी बनाने का काम, यानी इन कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को देखने का काम कर दिया गया गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स का काम गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि वेदर पब्लिक विल कम हियर, द पब्लिक विल एक्ट एज एन प्लेयर और प्राइवेट विल एक्ट. ऑबिंग इंप्लीमेंटेशन, यानी पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन. बट अब ये भी ट्रेंड चेंज हो रहा है. गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिसी बना रही है और अब अपने लोगों के साथ एनजीओस के एनजीओस, दे आर कंबाइनिंग विद एनजीओस एंड सिविल सोसाइटीज एंड नाउ दे आर इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज. So slowly and smoothly, this trend is also changing. Okay, slowly and smoothly, this trend is also changing. So, however, the basis for new economic, हमारे यहाँ new economic policy, you see the new economic policy that started in 1991. मैंने आपको बताया ना, that is related to LPG. और इसको हम लोग कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज गिविंग अवे नेहरूवियन पॉलिसी. नेहरूवियन पॉलिसी यानी हम नेहरूवियन पॉलिसी को हम लोग गिव अप करके आ रहे हैं और हम एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी जिसका गवर्नमेंट ने नाम दिया मिक्स्ड इकोनॉमी के एरा में हम आ गए.
हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के एरा में आ गए. एंड यू सी यू हैव रिटन इट दैट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज सेंटर्ड अराउंड लिबरलाइजेशंस ऑफ इकोनॉमी. व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशंस ऑफ इकोनॉमी? What do you mean by liberalizations of economy? Please tell me. Yes, liberalizations of economy. लिबरलाइजेशंस ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास पहले मोनोपोली थी. Before 1919, as I have said earlier also, there was monopoly. Monopoly was there in the hand of government. And when monopoly was there in the hand of government, so you see, जब मोनोपोली गवर्नमेंट के हाथ में थी, तो गवर्नमेंट was bound to get लॉस. गवर्नमेंट को लॉस करना उनकी मजबूरी बन गई थी. और यही वजह है कि यू सी दिस इज ओनली द रीजन दैट वी लिबरलाइज. और मोनोपोली गवर्नमेंट के पास, आप देखिए ना, ठेका राज, परमिट राज, लाइसेंस राज, ये सब गवर्नमेंट के पास. और ये बहुत रिजिड प्रोसेस थे. इट वॉज अ वेरी रिजिड प्रोसेस. एंड बिकॉज ऑफ दिस रिजिड प्रोसेस द कंट्री वॉज सफरिंग, क्योंकि लिबरलाइज था नहीं. जब लिबरलाइजेशन आप लेकर आए, तो जब लिबरलाइजेशंस लेकर आए, तो आप लिबरलाइजेशंस में आपने क्या किया? इन दिस लिबरलाइजेशंस व्हाट यू हैव डिड? इन दिस लिबरलाइजेशंस यू अलाउड एमएनसीज. आपने एमएनसीज को यहां पे बुलाया, और जब एमएनसीज आई तो ये आपको रेवेन्यू जनरेट कर रही है. यू सी, हम जब इस रेवेन्यू को लाए तो हम लोगों ने क्या किया? इस एमएनसी के थ्रू वी स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यूज, और ये रेवेन्यूज विच इन टर्न डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अब डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से क्या समझते हैं? यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, गवर्नमेंट उस पर वेलफेयर पॉलिसी बनाएगी और एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देगी. Those who really required, जिसको ये रियली रिक्वायर्ड, दैट इज वाई लिबरलाइजेशन ऑकर्ड. और लिबरलाइजेशंस में गवर्नमेंट ने जो लाइसेंसिंग राज, परमिट राज और ठेका राज था, उसको खत्म कर दिया, लिबरल कर दिया. और आपको लाइसेंस लेने के लिए यू सी देयर वाज अ वेरी लेस लिबरल पॉलिसी वाज अडॉप्टेड. And because of that, you see the economy of government is really boosting up. But in the era of pandemic, it is again shrinking. But it doesn't mean that it's an end of history. Again, government will come up. So you see, market has proven their value as wealth generators. That is very true. अगर आप एमएनसीज को अलाउ करते हैं तो यू विल जनरेट अ मार्केट. But the government continues to play. जब मार्केट वेल्थ जनरेट कर रही है तो गवर्नमेंट इज स्टिल कंटिन्यू टू प्ले द रोल ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन द सोसाइटी. बट आप सारी चीजें मार्केट के ऊपर, यू कैनॉट रिलाई इट. ऑल द थिंग्स यू कैनॉट रिलाई ऑन द मार्केट. आप मार्केट के ऊपर सारा चीज नहीं छोड़ सकते हैं. क्यों? आप देखिए कि आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ ग्लोब.
When industrial revolution was there, America was also benefiting with industrial revolutions. तो उसने क्या किया कि इवन गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज को उन्होंने कहा कि मार्केट ही उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और एक्सेस लेवल पे मार्केटाइजेशन हो गया. मार्केट मार्केट एंड ओनली मार्केट. एज अ रिजल्ट क्या हुआ आप देखिए. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड in 1929 there was a quash in economy. इकोनॉमिक क्राइसिस ऑकर, और जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो दैट इज बीइंग रिगार्डेड एज अ डार्क डे इन द हिस्ट्री, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन यानी आप देखिए कि उन्होंने डेवलप किया. तो आप यही यू सी there is a campaign of compensations capitalism in the wake of global economic turmoil. 2009 में फिर से ये एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी कि अगर मार्केट को वेल्थ जनरेट करने के लिए आप कह रहे हैं एंड यू आर रिलाइंग मोर ऑन मार्केट, और अगर मार्केट क्वाश कर जाती है तो योर इकोनॉमी विल ऑल्सो डिपेंड डाउन. तब आप इस सोशल चीजें, ये जो सोशल सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, हु विल लुक आफ्टर दिस, तब ये जिम्मेदारी किसकी बनेगी. दैट इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1929 कि जब इकोनॉमी फेल कर गई अमेरिका की, तो अब भाई गुड्स एंड सर्विस डिलीवर करने वाले जो थे वो खुद ही अपनी दुकान बंद कर लिए. तो इस केस में लोगों ने गवर्नमेंट को अच्छे निगाह से देखना चालू किया कि नाउ गवर्नमेंट विल प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू अस. एंड ये रीजन बना कि गवर्नमेंट उनको गुड्स एंड सर्विस डिलीवरी करने के लिए गवर्नमेंट खुद ही बहुत लोन ले ली. भाई वेलफेयर पॉलिसी आप बनाओगे वेर यू आर गेटिंग नॉट अ सिंगल पैनिक रिटर्न. आप ₹1 रिटर्न आपको मिलता नहीं है वेलफेयर पॉलिसी से, आप केवल जनता के बेनिफिट के लिए करते हो. तो आप जब लोन ले लिए कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, जैसे बड़े बड़े मल्टी डैम्स आप क्रिएट करेंगे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम वेलफेयर पॉलिसी बनाएंगे, अनफॉर्चुनेटली आप ये भी नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि आपको जो आप द गवर्नमेंट्स विच वाज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज वाज ऑफ हाई रेट, क्वांटिटी वाज क्वालिटी, अगर आप कहें तो क्वालिटी वाज बैड एंड द प्राइस वाज हाई. गवर्नमेंट द पीपल फेड अप कि भाई अब गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा. तो देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट इमर्ज दैट वी वांट अदर्स प्लेयर्स टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज. तो गवर्नमेंट ने क्या किया आप देखिए, अमेरिका में, यूके में देयर इज रोनाल्ड रीगन एरा. रोनाल्ड रीगन एरा, गुड मॉर्निंग अंकिता, यू आर टू लेट टू ज्वाइन. सो यू सी रोनाल्ड रीगन एरा, उसने अपनी इकोनॉमी को फिर से रीडेवलप किया. मार्गरेट थैचर, थैचरिज्म जिसको कहा जाता है, उसने अपनी इकोनॉमी को फिर से रीबिल्ड किया और उसने कहा कि प्राइवेट आएगी बट गवर्नमेंट का कोर फंक्शन होगा वेलफेयर ऑफ द पॉलिसी. गवर्नमेंट कोर फंक्शंस विल बी वेलफेयर ऑफ द पॉलिसी, और मार्केट के ऊपर देयर विल बी अ रेगुलेटरी कैप कि इससे ज्यादा इससे कम मार्केट नहीं कर पाएगी. क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में क्राइसिस आते हैं गवर्नमेंट will not suffer. गवर्नमेंट विल नॉट सफर. आप देखिए भारत में पेंडेमिक आया हुआ है, मार्केट हमारे यहां भी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद, बट देखिए हम लोग ज्यादा पैनिक नहीं है. We are not panicked that much, but you just see America, you just see England and other country, those who really believes in privatization, they are really in panic. और यही वजह है कि again third wave of or second wave of pandemic has occurred. क्यों? क्योंकि आप again you open all this, all your corporates and all to get the economy, but ultimately once you open the corporate and economy, there should be in regulations.
दैट इज व्हाट. सो जो ये प्राइवेटाइजेशन का, तो हमारी कंट्री की, अब देखिए 2009 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, भारत में भी उसका इंपैक्ट आया था. देखिए, अगर आप उसे आगे पीछे थोड़ा देखिएगा तो यू विल सी दैट इंडिया वाज आल्सो सफरिंग विथ सत्यम. तो हमारे देश में सत्यम जो स्कैम हुआ था, इंडिया डज नॉट सफर. बट वर्ल्ड की जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, जैसे अमेरिका वगैरह, दे रियली सफर्ड विथ सब प्राइम क्राइस. तो आज भी अगर इफ वी कंसिडर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वी हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी. And the core functions of the government is only and only to provide goods and services for the society. And the wealth, to generate wealth, it is provided to the private player. And the private is not only the sole responsible for generating wealth. There are PSUs. India may be PSU, Navratna, Mini Ratna, and so many PSUs are there. They are generating revenue to the government. And government is making policies and program for the benefits of the citizens. Okay, so thus, while India continues to strive from the preambular values of socialism, the method of achieving the goal is modified towards market forces playing a greater role in the economy. Now, is it clear to everyone, Mr. Aziz, those who are listening? Is it clear? तो आप खुद रियलाइज करें. नाउ यू जस्ट रियलाइज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिएम्बुलर वैल्यूज दिए गए हैं, प्रिएम्बुलर वैल्यूज जो दिए गए हैं, ये किसके लिए दिए गए हैं? It has been provided for the people of our country. So that is why the word "we the people" will revolve everywhere. We the people जो है वो घूमता रहेगा, इन्हीं सब चीजों के पीछे घूमता रहेगा. या हम कहें we the people is the centered and everything will revolve around it, like socialism, secular, democratic, republic, sovereignty, socialist, secular, democratic, this is republic, and this is sovereign. ये सारी चीजें इन्हीं के आसपास घूमती रहेंगी, वी द पीपल के पास. क्यों? क्योंकि आप पीपल को अल्टीमेटली यू वांट टू अपलिफ्ट. दैट इज व्हाई प्रिएम्बुलर वर्ड वैल्यूज में सबसे पहला वैल्यूज दिया गया वी द पीपल. एंड वी डोंट नो व्हाट इज वी द पीपल. हाँ ठीक है, वी द पीपल दिया, हम भारत के लोग हैं. अरे क्या क्या चीज के लिए है, क्या क्या चीज दिया है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो नाउ दैट इज व्हाई वी से अबाउट socialism. That is, socialism in literal means that the distribution of goods and services or the distribution of resources of the economy in the country to be distributed equally or democratically. That is why we say socialism. The India is a socialist. Word has been incorporated in the preamble. एंड सोशलिस्टिक पैटर्न को अवॉइड करने के लिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको सोशलिस्टिक पैटर्न में डाला गया. आप उसमें देखिएगा, ऑलवेज इट इज रिलेटेड टू वेलफेयर पॉलिसी. ऑलवेज इट इज रिलेटेड टू वेलफेयर पॉलिसी. सो इट इज क्लियर टू यू ऑल. प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सो दैट आई कैन मूव अहेड, मैं आगे जा सकूं. Now, okay, fine. Now, you see, this in 2010,
the Supreme Court dismissed a petitions filed by NGO arguing for the removal of the word socialist from the Constitution's preamble. Why it was challenged? अब ये चैलेंज क्यों किया गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि द चैलेंज केम अंडर PIL from the fact that section 29A(5) Representation of People's Act 1951. 1951 यानी ये जो है, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इज रिलेटेड टू इलेक्शन. दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है ये इलेक्शन से रिलेटेड है. और आप देखिए कि जब हम बात करते हैं इस इलेक्शन से रिलेटेड है, तो 29 ये कहता है रिक्वायर्स दैट ईच पॉलिटिकल पार्टी हैव अ मेमोरेंडम ऑफ अंडर एसोसिएशन. अगर हर पॉलिटिकल पार्टी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर होगा तो फिर सोशलिस्ट कहां जाएगा? फिर तो सोशलिस्ट खत्म हो जाएगा. तो इसी बेस पर किया गया कि रिप्रेजेंटेशन, तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड हमारे प्रीएम्बल में है, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग. इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग. Or since it does not have any meaning, the NGO, that is PIL, was filed in 2010 to remove the word socialist. The Supreme Court has gave the justice. As we know that Supreme Court is the saver of our constitution. Supreme Court has saved, and this memorandum must include specific provisions that the body shall bear true faith to the principle of socialism, secularism and democracy. अब देखिए कितनी बड़ी बातें की गई हैं कि अगर ये मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो इट मस्ट इंक्लूड specific provisions that a body shall bear true faith to the principle of socialism, secularism and democracy. यानी इट मस्ट, इनका जो एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टीज का एसोसिएशन है, दिस मस्ट बी. विदाउट दिस अ बॉडी कैनॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ पॉलिटिकल पार्टी. And they says that without this, a body cannot be recognized as a political party. Without this, a body cannot be recognized as a political party in case party deviates from the constitutional goals. यानी ये तीन चीजों से अगर पार्टी डिविएट होती है, इलेक्शन कमीशन शुड डी रिकॉग्नाइज द पार्टी. इसका मतलब आप खुद रियलाइज करें, यू जस्ट रियलाइज बाय योरसेल्फ कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर डिविएटिंग फ्रॉम सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. there are many regional parties, और इसी के वजह से 2010 में इट वाज चैलेंज कि these parties are deviating from the goals of the preamble, the goals of the constitution. And when they are deviating from the goals of the constitution, when they are deviating from the goals of the constitution, so they must be de-recognized. इनको recognize नहीं किया जाना चाहिए. सोचिए कितनी बड़ी बातें की गई थी उस दौर में. दैट इज वाई देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका ये मोटो जरूर रहता है, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इनमें से कोई ना कोई जरूर मोटो होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू सी द कोर्ट reasoning was that since no political party objective to it and the election commission has not yet
occasions to re-recognize a party that refused to reaffirm its commitments to socialism. There, there really is no cause other than the academic importance of the questions that merit the hearing of this case. इसका मतलब ये बना, so that is why again you see in 2013 also PIL High Court sought an interpretation of the term socialist as used in the preamble of the Constitution. The PIL does not challenge the government policy as being unconstitutional, but wants the High Court to put, but wants the High Court to put to test the relevance of the term socialism in the Constitution, giving the various policies decisions of the governments that are contradictory to it, particularly since the liberal, liberalistic of economic being in 1991. सबसे बड़ी मुद्दा यही होता है कि आप देखिए 1991 में जो ये चैलेंज किया गया था, जो गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन, सो दिस विल डिस्कस टुमारो। ओके, ये जो गवर्नमेंट का वर्डिक्स है और अदर वर्डिक्स है, दिस विल बी डिस्कसिंग टुमारो। ओके, and after discussing tomorrow again we'll be continue with the other topic of it. So if you have any doubt you can ask with me. Okay, आप मेरे मेल आईडी पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो मेरे से। मेल आईडी इज manoj.mkd2dube@gmail.com। आप उसमें हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या टेलीग्राम में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, दैट इज unacademy_mkd। आप उसमें भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट। सो